तुम एक बात बताओ, अगर तुम रियलिटी में कुछ करना चाहते हो ना, अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम्हें तुम्हारे कुछ ड्रीम्स हैं, ठीक है, तुम्हारे कुछ एम्बिशंस हैं और तुम्हें उनको अचीव करना है, यू वांट दैट ड्रीम्स टू बिकम रियलिटी, यू वांट दैट ड्रीम्स टू बिकम ट्रू। मैनिफेस्टेशन वाली बात नहीं कर रहा, हाँ मतलब ठीक है मैनिफेस्टेशन बोल सकते हो उसको। व्हाट आई थिंक इज, एक बात बताता हूँ तुम्हें, मेरा मानना क्या है। सपोज इत्तेफाक से मैंने अभी हाल कुछ नोटिस किया, कैन यू रीड दिस नेम, ये बाद में पता चलेगा इसके बारे में, लग्जर इसका नाम है। तो व्हाट आई वांटेड टू से इज कि मैं मतलब मेरा ये पर्सनली ऐसा मानना है, ठीक है। सपोज करो कि 10,000 लोग हैं, 10,000 लोगों की भीड़ है, ठीक है। वो 10,000 लोग पोटेंशियल लोग हैं जो तुम्हारे कंपटीशन या फिर तुम्हारे कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, ठीक है। उन 10,000 लोगों में से 9,000 लोग ऐसे होंगे जो कभी कुछ एक्शन नहीं लेंगे। एक्शन तो छोड़ो, ऐसे लोग होंगे जिनमें पोटेंशियल था बट वो एम्बिशियस नहीं थे, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर ली है दैट नॉट एवरीबडी इज़ एम्बिशियस। हर कोई एम्बिशियस नहीं होता, हर किसी के ख्वाब नहीं होते। मेजॉरिटी में जो लोग बैठे हुए हैं ना, मेजॉरिटी में जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनको अगर कोई थर्ड पर्सन कॉन्वर्सेशन में महसूस करा दे कि नहीं भाई, दिस इज़ ऑल्सो वॉट यू हैव टू डू, दिस इज़ वॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू बिकम समथिंग, टू डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स, टू डू समथिंग फॉर योर ब्लड लाइन। तो वहाँ पे उन लोग को लगेगा कि, लगा कैसे, थर्ड पर्सन के कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने से उन्हें लगा दैट नहीं, ये चीज़ भी तो है, हाँ भाई करना तो है यार, सोचा तो है हमने, 45 की उम्र में धंधा तो हम भी करेंगे। और सपोज करो कि पोटेंशियल किस में है, मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल मानना ये है कि पोटेंशियल उस हर एक इंसान में है जिसके पास एक फिज़िकली बॉडी जो कि फंक्शनिंग है, वर्किंग है और काम कर सकती है जैसे वो चाहे। दूसरा, दिमाग, जिसके पास एक कॉन्शियसनेस है, जो सोच सकता है, वो आपका पोटेंशियल कॉम्पिटिटर हो सकता है। लेकिन हर एक बंदा जो आपका पोटेंशियल कॉम्पिटिटर हो सकता है वो आपका कॉम्पिटिशन होता नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास एम्बिशंस नहीं है। क्योंकि अगर हर किसी के पास एम्बिशंस होने लगे तो वहाँ पे ना सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी, रियलिटी में सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब उनके पास एम्बिशंस क्यों नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि हो सकता है शायद वो हमेशा बोर्न विद द गोल्डन स्पून वाले चाइल्ड रहे हो, है ना, सोने की चम्मच के साथ जिनने जन्म लिया हो, या फिर उनके सर्कमस्टांसेस, उनके सिचुएशंस, उनके सिनेरियोज ने कभी उन्हें इतना अलाउ ही नहीं किया कि वो सोचें, दे वर ऑलवेज लिविंग इन द कंफर्ट जोन, है ना। ये एक सिचुएशन हो जाती है। उसके बाद 10,000 में से 9,000 लोग तो ऐसे हट गए जिनके पास कोई एम्बिशंस ही नहीं है बट दे आर हैविंग द पोटेंशियल, राइट। और पोटेंशियल जो है ना, रियलाइज थर्ड पर्सन के करवाने पर नहीं होता। पोटेंशियल रियलाइज होता है जब आपको खुद कुछ ऐसी चीज़ों से चले जाओ या आपको खुद से अंदर से इच्छा आ जाए कि नहीं भाई, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू बिकम, और एल्स दिस इज़ व्हाट आई हैव टू अचीव, राइट, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू बिकम, है ना। वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, फिर चाहे वो आपकी खुद की पर्सनल लाइफ से रिलेशन में हो, फिर चाहे वो आपके अचीवमेंट्स से रिलेशन में हो, या चाहे आप चाहते हो कि आप कुछ सोशल वर्क करो, चैरिटी, डू एनीथिंग एनीथिंग, फिर चाहे आप किसी भी तरीके से कुछ भी सोचते हो ना, दैट इज़ व्हाट यू कैन अचीव। बट आप में पोटेंशियल था लेकिन आपने कभी सोचा नहीं, है ना। थर्ड पर्सन की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप नहीं हो सोचने के लायक, और आप मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ, खैर मैं अपने दिमाग की बात है ना बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद 9,000 लोग हट गए, 1,000 लोग बचे। 1,000 लोग वो हैंगे जिनके पास पोटेंशियल है, उनके पास एम्बिशंस है, राइट, बट वो है लेजी एम्बिशियस पीपल। लेजी एम्बिशियस पीपल पता कौन होता है? उनके पास पोटेंशियल है, दे कैन डू, बट दे आर ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेटिंग। हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे कि भाई
आ, कर लेंगे ना यार, अरे यार हो नहीं रहा यार, मतलब क्या ही करें, कैसे करें भाई, कोई आए रास्ता बता जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। हमें हर कुछ प्लेट फुल ऑफ स्वीट्स मिल जाए, सब कुछ अच्छा अच्छा, तुम्हें तुम्हारी थाली भी परसों वो मिल जाए, यू डोंट हैव टू सी एनीथिंग वर्स, यू डोंट हैव टू सी एनी अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ, यू डोंट हैव टू सी एनी worst case scenarios, you don't even have the guts to face any challenging situations that is going to come in your life. And that is what lazy ambitious people do, right? They want to achieve everything, they want to do something, they want to become someone, they want to have something in their life, but they are lazy ambitious people. There's a difference why they are called, I mean there is something to be particularly noted, that why they are called being lazy ambitious, right? तो 1000 लोगों में से 900 लोग ऐसे हट गए, अब उसमें से बचे 100 लोग, ठीक है। 100 लोगों में से इन रियलिटी लेजी एम्बिशियस पीपल के बाद आते हैं एम्बिशियस पीपल, जो एम्बिशंस रखते हैं, ठीक है, वो एक्शंस लेना भी चालू करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि वो हार्ड वर्क नहीं कर पाते, लाइक दे आर जस्ट डूइंग द थिंग्स जो वो अपने कंफर्ट जोन में रह के कर सकते हैं, ठीक है, जिससे उनका वर्क लाइफ बैलेंस या फिर मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस बना रहे, दे डोंट गेट बर्नड आउट, उन्हें मज़े भी करने जाने हैं, राइट, उनको घूमना भी है, उनको ट्रैवल भी करना है। इट्स नॉट एनीथिंग बैड अबाउट ट्रैवलिंग और enjoying or anything like that, but I personally think कि at least do something, at least become someone, at least have something from the depth of your heart that allows you to have that much level of confidence that yes, you have achieved something and you can do better. At least have some evidence, at least have some proof that you have did, like you did these things, you did these things, right? So this is where the difference comes. So 100 में से 90 लोग वैसे हट गए। अब तुम खुद सोचो कि वो जो 10 लोग बचे हैं वो जल्दी गिव अप कर देंगे। क्यों? क्योंकि चीज़ों को लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना रियलिटी में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तुम जॉब से आओ, फिर तुम बैठ के काम करो, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। हालांकि आई ऑल्सो यूज टू हैव अ जॉब, बट मैंने उसको रिज़ाइन किया था, इसलिए मैं अपनी जॉब पे इसलिए नहीं कर पा रहा था बिकॉज दैट वाज माय फिजिकल जॉब, मैंने कोई ऐसी ऑफिस जॉब नहीं कर रहा था, ठीक है। सो उसमें डिफरेंस ये था कि आई वॉज टोटली फकिंग एग्जॉस्टेड। जब मैं अपनी जॉब पे जाता था मैं अराउंड 10-11 घंटे की नींद लेता था एवरी सिंगल डे, क्योंकि मैं उस लेवल पे एग्जॉस्ट हो चुका था। 45-48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है बाहर का, एंड आई एम रोमिंग इन द हॉट, एंड आई एम रोमिंग इन द ओपन, ठीक है। तबीयत भी ख़राब हो रही है, सब हो रहा है, वेट लूज़ हो गया, सब खराब, सब। खैर उस चीज़ के बारे में बात नहीं करता। तो you don't want to work after your job, you just have to maintain that work life balance, that there is something known as my personal life. I need to give time to my girlfriend or people who are very close to me. I need to have some fun, man. I need to be very social, right? अगर मैं social नहीं होऊंगा तो भाई क्या, like फोमो नहीं हो जाएगा मुझे। एंड ब्रो, योलो, यू लिव ओनली वंस यार, अगर अभी नहीं जिएंगे तो फिर कब जिएंगे। तो उस 10 में से भी 9 लोग ऐसे होंगे जो जल्दी गिव अप कर देंगे बिकॉज दे डोंट हैव द पावर टू सस्टेन। अब रियलिटी में काम कितने बंदे कर रहे हैं? एक बंदा, लिटरली एक बंदा काम कर रहा है हु विल डू समथिंग। नाउ आई पर्सनली फिगर्ड दिस आउट दैट द ओनली रीजन फॉर योर फेलियर इज फर्स्ट दैट यू डिडंट वर्क हार्ड ऑनेस्टली, कि from the depths of your heart, right, from the depth of your heart, you know that you could have done better, you must have been doing better, but you didn't, you literally didn't, and that is where the difference comes. The reason number one for failure is that people don't even give their best. People don't even give their best. People are not bothered by giving out their best. They are just thinking that they are doing, but that's not hard work, that's not really what is needed.
Hard work means hard work. Hard work means hard work. You need to understand this. And the second reason is that if you have done the first step very seriously, like you're working hard every single day, every single hour of you being waked up, the second reason for your failure is that you gave up too early. You gave up too early, because I don't think so that there is any other reason for your failure. I really just don't think so, because if you have worked hard, if you have the attitude to not to give up, if you didn't even give up, if you didn't even give up on your situations and the work you have been doing, there is no option for failure. It will take a long time. It will take months, years to figure out whatever you are doing. You have to go out through that lonely part, but does that mean that you have to give up? No, that doesn't mean that you have to give up. You need to go through all of that shit. People will not understand this. Even you yourself find yourself in a fucking middle confusion state that what the hell I'm doing. You are not friends with the people you are friends with because they are partying, they are having fun every weekend. Your personal relationships are disastrous because you don't have any time. People just don't understand you. And you know what? You yourself know that you don't fit in this generation. You don't fit with the people around you. So you yourself will become lonely for that. That is the thing. That is the thing where you have to just keep going on, because once you start working hard, once you start really working hard by being honest to your own self, you need to understand this. The competition is over. There is nobody in your competition if you're really working hard. If you're really working hard, there's no motherfucking competition. The second thing is, just don't give up. Just don't give up. And for people who are doing the hard work and are not giving up every single day, who have just mastered the art of showing up every single day, that they cannot be defeated. You cannot defeat a person who shows up every single day, right? So for a person who has the guts to show up every single day, doesn't matter however his last days were going on, is a person who cannot be defeated. And let me tell you something. If you really want to even beat the people who are doing the hard work and are not giving up, you need to work even harder than them. If you want to become the best, if you want to become the absolute great, if you really want to dominate anything, it's not about, bruh, like what? I'm good, I can do this. There's a difference between people standing in the league, and there's always one person who is dominating that particular niche that you're in. Have you ever imagined what kind of person that is? He literally outworked every single person who was working hard. He outworked every single person who didn't give up. He outworked every single person. That is where the difference lies. If you really want to dominate, if you want to become something, if you want to be the person in that particular niche, whatever you are doing, it can be sports, music, academics, job, technical job, whatever kind of jobs are there, business, but there is a difference. You need to understand this. There is a difference. If you are really thinking that you are also the one in the league, that's very good for you. But there will always be a person who is dominating that niche. And the only thing that he did and you didn't was he worked even harder. He outworked every single person who was working hard.
He outworked every single person who has the attitude to not to give up. That is where the difference lies. If you don't understand this difference, I think if you understand this much, you need to do something, and how you can actually become the one person in that particular niche, right? You can work hard, you have to have that attitude that you don't have to give up, right? People will mock you down, people will demotivate you on your face. Don't give a fuck to them, man. Don't give a fuck to them. Do the things that are required. Don't listen to them. Do not listen to them. That is what I wanted to say, and this is it. I hope that someday or the other, even if this particular section of 16, 17, 18 minutes helps someone, that will create a huge impact on his life. You can be the person in the league, and you can be the person who is dominating that niche, right? So, and there is always a person who is dominating every single niche, right? Like any niche, any category of work, any niche you are just in, there will always be a person who is the master, who is the master. He wasn't born with all the skills and the things that he has to become that master. He acquired every single thing. That is what you have to do. So, either you can be the person with potential, either you can be the person who is lazily ambitious, either you can be the person who does not have the guts to take action, either you can be the person who cannot work hard, either you can be the person who will give up very easily, or you can be the person who works hard every single day, does not give up, and you can be the person who outworks the people who are working very hard, who have the attitude to not to give up. You can just outwork them, and you will definitely dominate every single category you just enter in. So that is what you have to do, and this is just one thing that I wanted to say. I hope one day or the other it will help somebody, or even if it doesn't, it will help my own future self, because that is what I do. And don't give a fuck about others, man. Literally, don't give a fuck about others. Just do your work, and do your work. That's it.